Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are discussing methods to calculate national income. This is in continuation of my last video. So here we are discussing the second method, that is income method. So let's begin. So how do we calculate national income using income method? We add the income of all factors of production in an economy in a given year. So factors of production किस किस फॉर्म में इनकम अर्न कर सकते हैं इकोनॉमी में? तो कुछ लोग होते हैं जो जॉब में होते हैं तो उन्हें इनकम के फॉर्म में क्या मिलती है? वेजेस, राइट। ऐसे ही अगर किसी को लोन दिया हो, किसी को आपने मनी लेंड की हो, तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट पे करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इनकम, राइट। देन पीपल दे अलाउ अदर पीपल टू यूज देयर एसेट्स and earn income through rent and royalty. Then business firms, they earn income in the form of profit. एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व हैं, जो अपने लिए ही काम कर रहे हैं, तो उनके लिए हम कौन सा फैक्टर कंसिडर करते हैं? मिक्स्ड इनकम. सो टू कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग इनकम मेथड, वी एड ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ इनकम, दैट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज विच इज सेम एज द वेजेस. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल, डोंट वरी. So compensation of employees, rent and royalty, interest, profit and mixed income. You add all these and you will get domestic income of country, which is NDP-FC. And one thing to note here is income from rent and royalty, interest and profit is also known as operating surplus. So to calculate national income using income method, we add these components: compensation of employees, operating surplus and mixed income. Now let's discuss the components of NDP-FC in detail. So first is compensation of employees. Compensation of employees is nothing but the amount paid to the employees for rendering their productive services by employer. तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो एज एन एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉयर जो भी आपको देता है, पे करता है, in whatsoever form, that is your compensation of employees. Usually compensation of employees के तीन elements होते हैं. First, when you receive your सैलरी इन कैश, दैट इज वेजेस एंड सैलरी इन कैश. अब कैश की फॉर्म में क्या क्या मिलता है? बोनस मिलता है, ठीक है, और आपको इंक्रीमेंट मिलता है, डीएनएस अलाउंस होता है, कमीशन होती है, एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट कंपोनेंट इज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड. कई बार आपको सैलरी इस तरह से भी दी जाती है दैट कंपनी दे गिव यू रेंट फ्री होम, दे गिव यू medical facilities for your family and education facilities for your children. So these are wages and salaries in kind. Then next is employers contribution to social security schemes. ठीक है, अब क्या होता है, एम्प्लॉयज कई बार जब कमाने की सिचुएशन में नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल वो रिटायर हो गए हैं, ठीक है, ओल्ड एज में हैं, सिक हैं, या फिर किसी वजह से उन्हें अपनी एम्प्लॉयमेंट ड्रॉप करनी पड़ती है. सो these social security schemes like provident fund, retirement pension, gratuity, etc., it ensures the security of employees. ठीक है, और ये कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एम्प्लॉयर. प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे, आपको न्यूमेरिकल में कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन की जगह एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन होता है, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो compensation of employees, short form is COE. It has 3 elements. आपको न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, या तो आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली दिया होगा, और एल्स दे विल गिव यू दीज 3 elements, और मे बी एनी out of these 3 elements which will represent your COE. But if compensation of employees is directly given, then you should consider that only. Then next is operating surplus. As we know, operating surplus, it consists of rent and royalty, interest and profit. So first of all, what is rent and royalty? As we all know, whenever we allow other people to use our asset, the income which we receive in return is called rent and royalty. जैसे आपने लैंड एंड बिल्डिंग अपनी किसी और को यूज करने के लिए दी, तो उससे आपको जो इनकम रिसीव होगी वो है रेंट. वैसे ही रॉयल्टी क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, ओनर्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स लाइक कोल, आयरन और एक्सेट्रा कैन अर्न इनकम बाय गिविंग राइट्स ऑफ माइनिंग टू दी कॉन्ट्रैक्टर्स. आपके पास कोई ऐसी लैंड है जहाँ पे अंदर मिनरल डिपॉजिट्स हैं, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग माइनिंग योरसेल्फ, you are giving the rights of mining to the contractor who is using your asset. ठीक है, तो वो आपको उसके बदले में जो इनकम देंगे उसको रॉयल्टी बोलेंगे.
Then next is interest. Interest is the income received for lending funds to a production unit. एक चीज का ध्यान हम रखेंगे, जब भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, we only and only include interest on such loans which are taken for productive purpose. Loans which are taken for consumption purpose, interest on such loans are not included. For example, I've also written here, interest paid by government on public debt. Public debt is basically the loan taken by the government from public for their borrowings. Similarly, interest paid by consumer. Consumer, they take loan for consumption purpose, not for production purpose. So such interest on loans will not be added. Then next is profit. Profit is nothing but the reward of the entrepreneur who is contributing towards the production of goods and services. Or you can say कि जब entrepreneur अपनी सारी cost meet कर लेता है, they pay factors of production, they pay for raw material and other expenses are also incurred, then whatever is left with the entrepreneur, that is his profit, that is his income, right? Now profit also has three components. So the entrepreneur, they pay direct tax to the government on the total profit earned. जितना प्रॉफिट अर्न हुआ है उसमें कुछ परसेंटेज एज ए टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स. देन पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड. देन नेक्स्ट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स. प्रॉफिट का कुछ पार्ट एंटरप्रेन्योर डेफिनेटली अपने लिए रखता है विच ही यूजेस एज कैपिटल फॉर नेक्स्ट ईयर और मे बी टू एक्सपैंड हिज बिजनेस, या फिर कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो उसके लिए भी वो कैपिटल, वो रिटेन्ड अर्निंग्स यूज की जाती हैं. ठीक है, सो प्रॉफिट के ये थ्री पार्ट्स हैं. अब अगेन न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है, या तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दिया होगा या फिर आपको ये तीन कॉम्पोनेंट्स दिए होंगे प्रॉफिट के, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग्स. और अगर आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दिया है तो आप इन तीनों को इग्नोर कर सकते हैं. देन लास्ट component of NDPFC is mixed income. We have discussed this earlier also that some people, they are engaged in self-employment, right? So they also earn income in the form of wages, rent, interest and profit, but these elements, they cannot be separated from each other in the case of self-employment. For example, income of a doctor running a clinic at his residence. Now he is running the clinic at his residence, so first of all, he does not need to require to take any land on rent from outside. He is using his own building, तो वो अपने आप को ही rent पे कर रहा है. And doctor, he himself is providing the services, so he is paying him the wages also, right? So in such case, basically you cannot separate these forms of income. हम rent को wages से separate नहीं कर सकते क्योंकि आप नहीं उसको calculate करोगे. ठीक है, तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, वी टेक मिक्स्ड इनकम. सो आई होप ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ NDPFC आर क्लियर टू यू. नाउ वी कैन मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स एंड वी कैन सी हाउ वी कैन कैलकुलेट नेशनल इनकम यूजिंग द income method. So whenever you are getting any numerical for income method, you just have to have to look for all the components which we have discussed just now: COE, rent and royalty, interest, profit, right, and mixed income. So here in this numerical you will see wages and salaries are given to you 500. Then employer's contribution to social security scheme is given to you as 50. Then next is operating surplus is given to us directly. अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो हम अलग से इसमें प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करेंगे, प्रॉफिट भी दिया हुआ है अलग से, बट वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस में इंक्लूडेड है. And the last component is mixed income, which is given as 200. So simply you'll write the formula: NDPFC is equal to wages and salary plus employees contribution to social security scheme plus operating surplus plus mixed income. Put the values, you'll get NDPFC, which is 1650 crores. And then from here you can calculate national income, that is NNPFC. All the things are same, only we are going from domestic to national. जब NDPFC से NNPFC पे जा रहे हैं तो हम बस domestic से national पे जा रहे हैं. So you will add NFIA. We'll get the answer 1640 crores. Then next numerical, again you will look for the components of NDPFC. So compensation of employees is given to you. Operating surplus is given to you. Here mixed income is missing, so you can avoid it.
NDPFC can be calculated by adding COE plus operating surplus, which will come out to be 2620 crores. Then national income can be calculated from NDPFC. You just have to add NFIA, okay, which is also given to you. Net factor income from abroad is given to you as -20. So the national income is coming out to be 2600 crores. Last topic, precautions of income method. So what all precautions you have to keep in mind while you are calculating national income using the income method, what all types of income to be included and not to be included. So the first is transfer income. They are not included because we know they are unilateral in nature. They are one-sided. No services are provided in return for such types of income. For example, scholarship, donation, charity, etc. Then income from sale of second-hand goods. अगर आपने सेकेंड हैंड गुड्स को सेल किया है तो उससे जो आपकी इनकम आ रही है वो भी आप इंक्लूड नहीं करते. Similarly, income from sale of shares, bonds and debentures, because these are mere paper claims. यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोई न्यू प्रोडक्ट जनरेट नहीं हो रहा, कोई न्यू गुड और सर्विस जनरेट नहीं हो रही. दिस इज ओनली ट्रांसफर और दिस इज ओनली यू आर ट्रांसफरिंग द ओनरशिप, right? Then windfall gains like horse race, lotteries, they are also not included because it does not involve any productive activity. Then imputed value of services provided by owners of production units will be included. So basically they are saying, जैसे हमने वो बात की थी ना, doctor running clinic from his own residence, so he is providing the land for the clinic to himself. तो उस land की जो imputed rent होगा वो हम include करेंगे. Then payment out of past savings or wealth are not included because it does not add to current flow of goods and services. यहाँ कोई नया good या service generate नहीं हो रही, हम अपनी past savings को use कर रहे हैं. So whenever we are making payment out of that, it is not included in calculating national income. This is a simple topic and very important from the exam point of view. And thank you so much for watching the video. Please like, share and subscribe.